Yep. When it grows, it grows. Whenever it dies, will And when it dies, it dies. Come on. If it works, it works. Whenever it flies, will Let it fly, let it Whenever fly. it fails, will When it fail. fails, it What's meant to fails. soar, will soar. I I am planting. A very, very warm welcome. Welcome, all of you, to be part of this journey, on this journey, being here and begin our day with this beautiful song. A beautiful reminder that our only work is to just plant the seed and let go. And whatever grows will grow, whatever dies will die, whatever flies will fly, what's meant to soar will soar. We are just planting seeds and nothing more. So, thank you all. Thank you all for being here, for being part of this journey. Because without you all, there will be no this journey. So, truly bowing down to your presence, your commitment, your being here, and allowing all of us to discover this beautiful power that is running all our lives. And we are coming together to trying to make sense of it and create consciously the life we truly long for, the life we truly deserve. So thank you all for being part of this journey. Thank yourself for being here and, with your presence, making it available to so many more people. So thank you today and every day. Thank you. We are on chapter 3. So today we are going to conclude the chapter 3 and then we would love to hear from all of you what you are taking back from chapter 3. So let's begin. Drishti, we are ready? Yeah. Perfect. Yesterday you read all this. We did not do the explanation of last 2 paras, so I'll do that. Great. All right. So let's begin. So we read that again, or you are? I think I will just explain. Yeah. तो जैसे कि कल हमने, ending में ही देखा that how we start the day, that will set the tone for our lives. How we start the day, it sets the tone for our life. क्योंकि हर रोज नया दिन है, हर रोज एक नई शुरुआत होती है और वो शुरुआत कैसे करे उससे हमारा दिन डिफाइन होता है और वो दिन से हमारी लाइफ डिफाइन होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर अगर हम एक है कि हम बातें करते रहे और दूसरा है कि हाउ डू वी ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस. So somewhat, of course, this is not when everybody is waking up, but this is still the beginning of the day. What we are doing here together is somewhere the beginning of the day. So now the question is, how do we begin this consciously? How do we, एक है कि अच्छा सेशन अच्छा गया तो मुझे अच्छा लगा. अगर एक्सप्लेनेशन ठीक हुआ, 10 जन ने ठीक से बोला तो मुझे अच्छा लगा. अगर सेशन ठीक नहीं गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो आज बोर हुआ, आज थोड़ा अच्छा नहीं गया, आज थोड़ा कुछ ऑफ लग रहा था. So if we are coming from this, what energy are we in? Isn't it victimhood? Isn't it at mercy of life? कि जो हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है मेरे अंदर क्या हो रहा है. अगर हम जो यहाँ सीख रहे हैं, अगर वो यहाँ पे हम ये घंटे के लिए यूज करें, for this 1 hour, how do I use my free will? How do I use my free will? कि no matter what happens, I will make this 1 hour work for me. No matter what happens, मैं above the line emotions दूंगी ही. Because what happens is depended on so many factors. It's me being in flow or not. It's so many other things. It's, somebody participating, this, that, internet, light चली गई. Versus अगर हमने अपने अंदर एक commitment रख ली कि कुछ भी हो, this will work for me. तो suddenly we are using the free will for ourselves. Suddenly हम ये चीज को अपने लिए काम कराने पे मूव करेंगे और एक ही फैक्टर है जो हमारे हाथ में है, how we are with it, what we are giving to it, हम उसको फुल्ली यूज करेंगे. सो अगर हम एक बार क्रिएटरहुड में आ गए, there is an opening कि okay, no matter what, I will feel this here. There is an opening कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, I will reach out to Bhumi, I will reach out to 2 other people and we will see how to make it work. और अगर वो काम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी I am committed to making this work for me. I am committed कि ये 1 घंटा मेरे लिए ठीक रहेगा. So can we take that commitment? Can we यहाँ पे ही हम creatorhood शुरू करते हैं. Because victimhood में क्या होता है, मेरे साथ ये हो रहा है. जब हमारे साथ हो रहा होता है, हम
हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता है पावर में टैप इन करने का, एंड अनकॉन्शियसली हम एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह जजमेंट्स पाल लेते हैं। जब जजमेंट आती है कि अरे आज ठीक नहीं गया, अरे आज अच्छा गया, यार इससे पहले का सेशन ना इससे बेटर था, यार शायद मैं कुछ और कर लेती, यार अभी मैं सो जाती, तो हमें लग रहा है रियलिटी हम पे थोपी जा रही है और हम अभी क्या करें कि खुद को उससे बचाए। और हम और ये सिचुएशन है और हमारी जजमेंट आई तो हम वो सिचुएशन से मिसअलाइन हो जाएंगे, तो हम उससे और दूर 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 होते जाएंगे, एंड वी माइट एंड अप गोइंग बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी कि हमारे साथ ये हो रहा है। वर्सेस जब हम क्रिएटरहुड में है, इट इज लाइक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज क्लोजर टू कमिंग बैक टू लव, इट इज क्लोजर टू कमिंग बैक टू अलाइनमेंट कि मैं यहाँ क्या करूं, मेरा यहाँ क्या पावर है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल ओपन अप फ्रॉम देयर। So it's an invitation. We can just take like 10 seconds, close our eyes and remind ourselves कि मैं यहाँ पे क्रिएटर हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस फील्ड है, और आई एम कमिटेड टू मेक दिस वर्क फॉर मी, नो मैटर हाउ द सेशन गोज, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम कमिटेड, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे लिए कैसे काम करता है, एंड आई एम कमिटेड टू मेक इट वर्क फॉर मी नो मैटर व्हाट द सेशन गोज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो द चैप्टर इज सेइंग द सेम थिंग कि अगर हम हमारी शुरुआत खुशी से करते हैं, एंड अगर हम खुश रहते हैं ज्यादा टाइम, तो हमारा दिन बहुत सुंदर जाएगा, बहुत ही सुंदर जाएगा। पर अगर हमने बैड मूड से शुरुआत की एंड वी डू नथिंग टू चेंज इट, तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग, वी कैन ऑलवेज डू समथिंग टू चेंज इट। पर उसके लिए पावर किसके पास होना होगा? सिचुएशन में नहीं, हमारे पास। So each moment is that present to all of us to take that power in us. ये सेशन कैसा भी जा रहा है, आई विल, अगर मुझे लग रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा है, आई विल टेक इट ऑन टू मी टू इंश्योर आई एम कमिटेड टू फीलिंग अबव द लाइन। तो फॉर द डे, फॉर आवर लाइफ्स, और ये हर एक मोमेंट का हम चार्ज लेंगे, जिंदगी बदलेगी। One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life, provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good. You begin the next day with a momentum of good feelings. So there are studies done कि सिर्फ 24 घंटे एक जन अगर ब्लिसफुल स्टेट में रहता है, अगर सिर्फ 24 घंटे एक जन बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसका ब्रेन का कैपेसिटी फ्रॉम 100% बढ़ता है। 100% उसकी जो करंट ब्रेन कैपेसिटी है इन स्ट्रेस, उससे वो 100% बेटर हो जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। द वे द पर्सन फंक्शंस, उसकी जो बॉडी जैसे फंक्शन करती है वो बदल जाती है, जस्ट विथ वन डे ऑफ फुल्ली बीइंग हैप्पी। तो अगर हम सब 24 आवर्स सिर्फ एक इमोशन को कमिट होके सिर्फ निकल गए ना, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, प्रॉब्ली दैट विल बी इट फॉर अस। बट ऑफ कोर्स वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम छोटी छोटी शुरुआत करते हैं, हम 1 घंटे से कुछ एक थोड़े थोड़े टाइम से शुरू करते हैं। बट लेट्स, वी कैन एम, अगर वट एवर वी से इज पॉसिबल, तो लेट्स एम के एक दिन से शुरुआत करूंगी, दिस डे आई विल लिव माई बेस्ट डे, दिस डे हर सिचुएशन में आई विल ओन अप व्हाट आई कैन डू, I will not create the distance in that situation with judgment. I will connect it with love. So सिर्फ एक दिन अगर हम अच्छी फीलिंग का मोमेंटम रखें, not only our day changes, our life changes, our whole destiny changes. So as we continue to feel good as much as we can, our feelings continue to multiply by the law of attraction, and life gets better and better. So एक simple quote है कि live today, not yesterday, not tomorrow, just today. And the core of this is inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. जब ये होगा तब मैं खुश होंगी, जब सब परफेक्ट जाएगा तब मैं खुश होंगी, जब मेरे साथ जो मुझे चाहिए वो होगा तब मैं खुश होंगी, जब मेरे को पति ये करेगा तब मैं खुश होंगी। नो, इस मोमेंट, इस ये मैं खुश होंगी, कुछ और हो ना हो, मैं खुश हूं, कुछ और हो ना हो।
जब ऐसा होगा तब नहीं, कैसा भी होगा मैं खुश हूं। दैट इज द क्रिएटरहुड। नहीं तो विक्टिमहुड, एंड जितना विक्टिमहुड हम बोर्डन से शुरुआत करेंगे, एंड बिफोर वी नो इट वी आर केज्ड इन द फियर एंड शेम एंड गिल्ट, you know, because I remember there was like a 6-8 month phase of my life जहाँ पे घर पे इतने इवेंट्स थे, इतने फंक्शंस थे, यू नो, एंड मैंने उसको इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी और इमेजिनेशन बना दिया था कि मैं एंटी सोशल हूँ, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे इवेंट्स फंक्शंस नहीं पसंद है। तो शायद वो 6-8 महीने में 5 फंक्शंस होंगे, बट मेरे लिए मैंने उस अपने दिमाग में वो 5 फंक्शंस को 5 लाख फंक्शंस बना दिए थे। बिकॉज वो उसके फ्री टाइम में भी, या मैं सिर्फ रिकवर कर रही हूँ कि ओ माय गॉड एक बड़ा फंक्शन कर लिया, ओ माय गॉड एक बड़ा, या फिर आई एम लाइक इन दैट स्ट्रेस के अरे बस एक और आने वाला है, एक और आने वाला है, एक और आने वाला है। मे बी वो 6 महीने में पूरे 24 घंटे या 48 आवर्स के भी फंक्शंस नहीं होंगे, बट वॉट इट डिड फॉर मी इज इट कंज्यूम्ड माई होल 6-8 months एंड एक मेरे को डाउनवर्ड स्पाइरल में डाला, राइट? Isn't that what we so many times end up doing? Either we are worrying, either we are cribbing कि मेरे साथ ऐसा हुआ पास्ट में, और वी आर वरिंग मेरे साथ क्या होगा। और हम वो इमोशन से देखते हैं तो हमें फ्यूचर भी ब्लीक ही लगता है, हमें लगता है कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो व्हेन वी आर नॉट इन द प्रेजेंट, वी आर नॉट इन लव एंड वी आर नॉट इन पावर, you know, we are in victimhood, we are in judgment, and we are in misalignment, and we are in a downward spiral. Is it making sense? So बस इस मोमेंट को पकड़ लिया कि ये मोमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हजारों फैक्टर्स है जो मेरे फ्री विल से नहीं चल रहे, बट सिर्फ एक फैक्टर, व्हाट आई चूज टू फील हियर, क्या कौन से इमोशन आई एम कॉलिंग फॉरवर्ड, बस वो मैंने अपने हाथ में ले लिया, मेरी पूरी जिंदगी मेरी हो जाएगी। I will be the master of my life, my destiny, and I will live an incredible life. Yeah, can we do that? A small commitment. सिर्फ ये moment. And actually हर moment is fresh. You know, हर moment is new. But उसमें मैंने past का baggage डाल दिया, तो वो चीज मेरे लिए सेम हो गई, और फिर लाइफ ड्रैग हो गई। कैन वी जस्ट सी, अच्छा ये फ्रेश है, यहाँ पे कुछ नया हो रहा है। शायद मैं वो फंक्शंस में ओपन माइंड से जाती, आई नो दैट फंक्शन हैड नेवर एवर हैपेंड, बट मेरी स्टोरी में था कि अरे मैं इतने फंक्शंस अटेंड कर रही हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए इतना बैगेज हो गया। वर्सेस इफ आई हैव अ क्लीन स्लेट देयर, इमेजिन कितनी नई चीजें होती, कितनी नई चीजें खिलती, मैं कितना ज्यादा एंजॉय कर सकती, और मैं एंजॉय करती हूँ, यू नो, व्हेन आई एम देयर आई एंजॉय। बट फिर अगर मैं रोने लगती हूँ तो वापस वो 100 चीज में से एक चीज मैंने पकड़ ली कि देखो इसमें मजा नहीं आया, इसलिए मेरे को फंक्शन। सो माइंड इज लाइक, यू नो, तुम उसको जो इंस्ट्रक्शन दो वो उसमें से वैसे आ, उसके प्रूफ्स लेके आएगा, और तुम्हारी स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग 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 करता जाएगा। सो एवरी मोमेंट इज फ्रेश, एवरी डे इज फ्रेश। पर अगर हम इसको जजमेंट के चश्मे से, कंपैरिजन के चश्मे से, विक्टिमहुड के चश्मे से देखेंगे, वी विल मिस इट। सो प्लीज कोई और सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करो अपना प्रेजेंट। द पावर, एक्सेस टू पावर इज फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। इसको कोई और चीज के लिए रेंट आउट नहीं करो। लेट्स ओन अप दिस थिंग। सो आई विल ओनली फिनिश दिस दृष्टि। So many people don't live for today, aren't we all? जब ये होगा तब मैं खुश होंगी, जब ऐसा होगा। So most of us don't live for today. मैं सक्सेसफुल होंगी फिर मैं खुश होंगी, मेरे पास ये होगा तो मैं पतली होंगी फिर मैं खुश होंगी। नहीं, they are completely consumed with the future, and yet it is how we live today that creates our future. Where is the access to the, मैं यहाँ पे बैठ के I'm like मुझे मैंगोस चाहिए, मुझे मैंगोस चाहिए, मुझे मैंगोस चाहिए, you know, या मैं जाके पेड़ लगाऊं तो कुछ होगा, या मैं मंगाऊं तो कुछ होगा। The moment I feel I can do something about it, तो कुछ मिलेगा। Like मैं यहाँ पे सिर्फ रोती रही, I will just not get that, and बाकी सब चीजें हैं वो भी मिस हो जाएंगी। So it is what you feel today that matters, because it is the only thing that determines your future. तुम्हारी ये मोमेंट तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है, हमारी हर मोमेंट हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है। फ्यूचर कहीं और नहीं है। हमने 9th में सोचा था 10th पास कर ले तो बस खत्म हो जाएगा, हमने 12th में सोचा था जॉब मिल जाए तो बस, यू नो, आई विल बी सेट।
फिर हमने सोचा था शादी हो जाए, बस इससे शादी हो जाए तो आई विल बी सेट, बस बच्चा हो जाए, अरे कब होंगे, कब कब, अभी, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट इज आवर एक्सेस. So her दिन is an opportunity for new life, because every single day we stand at a tipping point of life. कल हमने देखा कि just 51% हम positive रहेंगे, our spiral will be upward, सिर्फ 51%. सो अगर हम कॉन्शियस रहे, अगर डाउन भी जा रहे हैं, बट अगर हमारे यू टर्न्स फास्ट हो गए, वी विल सी नेचुरली, बिकॉज हमारे आजू बाजू एवरीथिंग इज लीडिंग अस टू लव. And on any one day we can change the future through the way we feel. So how, where is future? कुछ नहीं बदलने वाला है. कुछ तुम्हें मिल भी गया ना, ओशो बोलते हैं लाइफ में दो ही प्रॉब्लम्स है, एक जो तुम्हें चाहिए वो मिले, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, और तुम्हें जो नहीं चाहिए वो मिले, उससे तो हमने प्रॉब्लम बना दिया है. बट अगर हमारा ओल्ड सेल्फ हमें जो चाहिए वो मिले में जाएगा, तो वो उसको भी बिगाड़ ही देगा. The moment we go in above the line emotion and inhabit this moment, our life is never the same. So when you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast, you will scarcely believe it, you know. So बस एक बार तुम टिपिंग पॉइंट में रहो, तुम सोच भी नहीं सकते हो वैसे दरवाजे खुलेंगे. एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बस उसको ध्यान नहीं दिया है. And it's time to even being present to it and being aware of it. So points of power. Let's first hear what people are taking back from this journey. And अगर किसी को points of power use करने के भी उनको chapter explain करना है, then there is that opportunity. And then later we will just sum up what we are taking back from this chapter. So inviting all of you, okay, it's been almost close to 2 weeks. तो either इस chapter से या ये journey से क्या खुल रहा है, let's share that, let's be present to that, and let's acknowledge that. So yes, the space is yours, please share. Thank you. Maybe I can share. I think for me, my family's reflection of what I am and how I am in my day-to-day life. And these days I spend a lot of time at home. So I think for me, sure, I don't know how to point out and what to point out what has changed, but surely a lot of stuff has changed because they keep saying, right? Like I just go out of this session with like a big smile on my face and in that happy zone. And they just keep telling, and they have been noticing it since last 3 4 days, and they keep telling me that Bhumi is doing this session for you. Do you realize that kind of a thing? So it's interesting that in some ways it's hard to point out, like, what exactly, because yeah, I did start practicing a little bit of gratitude and things, but I think it's also not so regular. So other thing I wanted to do was like check in if sometimes, like, while our first 5 minutes or last 5 minutes, we can all practice certain things together, which are helping. That can also be good for the group. Another thing that was playing on my mind, like I heard this. So there's someone called as Brother David, who is in Austria. He turned 100 years old recently, just few 3 4 days back. He runs this organization called as gratefulness.org. And he spent like 10 years in silence. And after silence of his 10 years or so, what he came up with was that gratitude is something that's going to bring you to the peaceful state. And that's how this whole thing was born. And when I was reading his stuff and his website, and I've been following them for some time, but it's so, like, now it makes sense what all these people say, right? Like, I think everyone has been saying similar stuff, right? Like, operate from frequency or give gratitude, and but I think now I understand how it feels to
operate from that frequency. And I think smaller things do start changing in day-to-day life, uh, and yesterday, like we were going for a function, and my mother started saying that we are not going to get an auto, we're not going to, and then I keep reminding her that let's not get there. Let's think when we have got an auto initial, or just changing that, because it's not that I want to correct her, but it's still there in the awareness the whole day. And I think that makes a lot of difference, that we start with this and then it stays through the day. So, yeah, I think these were certain things that I wanted to bring up. Thank you, Drishti, for sharing. Truly heartwarming. Thank you. Yes, Namaste. Yeah, you're unmuted. You're yeah. पहले तो पूरा सेशन में सुनते हैं, तो अभी 3 दिन से मैंने रियलाइज किया करके कि 3 दिन से ऊपर से जाता है तो 25% इधर रहता है, 75% अंदर जाता है। मगर 3 दिन से जो कुणाल म्यूजिक लगाता है ना, तो उसके डांस में जो अंदर जो जाता है ना, वो वापस रिवाइज होके दिमाग में आता है। तो तभी बाद में मैं सोचती है करके कि हाँ, मेरे को इसमें से क्या उठाने का है। पूरा दिन वो सोचती है करके कि नहीं, कुछ तो मेरे को क्या उठाने का है। तो मैंने ये एक चीज जो मेरी हैबिट बन गई थी कि मैं हर एक टाइम ये लेती थी यूट्यूब पे, जो कुंडली का आपने कल बताया, तो वो मैं हर एक टाइम देखती थी। तो कल मेरे को यही रियलाइज हुआ पूरा दिन कि हाँ यार, ये तो मेरे अंदर है, तो वो मेरी लाइफ कैसा बता सकता है, वो किसकी लाइफ क्यों बता सकता है, वो तो मेरे अंदर है। इसके लिए मैंने 2 दिन से वो पूरा बंद किया, और हर एक टाइम कभी आता भी है ना, तो वापस दिमाग में आता है नहीं, ये मेरे अंदर है। तो वो मेरे को बहुत बहुत बेनिफिट हुआ। और ये जो डांस कर रही है ना, उससे एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ रही है, और वापस वही बोली ना करके कि 75 अंदर जा रहा है तो वापस ऊपर तक आ रहा है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरे को लगता है मेरी बॉडी पे। के लिए थैंक यू। बहुत मस्त, बहुत मस्त। एंड देयर इज अ साइंस, अगर हम फिजिकल मूवमेंट्स यूज करें, वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बॉडी विल ड्रॉप। देयर इज दिस होल साइंस ऑफ सोमैटिक्स, सो व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट मैजिक। इसके साथ आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हो, इट्स इनक्रेडिबल। एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस कुणाल। Yeah, I think so. Last night only, I was sharing with Bhumi that कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि बुक किसी को पहले से समझ नहीं आ रही थी या किसी ने अपने लाइफ में ये चीजें सुनी नहीं थी। हम हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा ये चीजें जानते रहते हैं। हमारे बड़े बोलते हैं कि कुछ बोलो तो अच्छा बोलो, या तो ना ही बोलो। तो ये बुक को भी अगर अगर 2-3 लाइन में भी अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कि बुक में क्या है, कि हम रोज ये चीज प्रैक्टिस करते हैं। बट आई थिंक सो एक सबसे बड़ी बात है कि एक लाइन की गई है कि कोई चीज को आदत बनने में 21 दिन की प्रैक्टिस लगती है। सो दैट्स सो विद दिस, आई व्हाट आई हैव सीन इज कि इट्स नॉट दैट वी डोंट नो, इट्स व्हाट वी कम हियर एंड प्रैक्टिस। हम यहाँ पे आके जो चीज, मैं वही बोलता भूमि को कि दिस इज सच अ ग्रेट थिंग कि कांस्टेंट दिन में बस 45 मिनट्स टू 1 आवर हम देते हैं, just for that reminder that yes, this we know, but this we practice, कि हम ये आज ये दिन में ये लेके जाएंगे। And जब तक ये हमारी आदत नहीं बन जाती है, एक एक नेचुरल नहीं बन जाती है हमारे अंदर, तब तक we will keep doing it and till it becomes our final destination. So yeah, I wanted to thank her. Last night only I did, but I still wanted to bring it up here. That to for at least for me, starting the note on this the day on this note really brings up a lot. Like my day has been a very smooth journey, and yeah, I whenever I go through the day, it doesn't feel heavy. We have a constant aura of flowing with it. So yeah, thanks, and thanks for everyone to
be so diligent and being here and staying around to make this day happen. Thank you for sharing, Kunal. Thank you. And yes, the sessions are not without y'all. You know, ये book तो मेरे पास थी, but all of us coming together is making these sessions. So thank all of you should thank your own self and thank all of you for being here and making this happen. And सच्ची ये book मैं first time कर रही हूँ ऐसा लग रहा है because I think so many things I'm just getting present to for the first time. मैंने 2 बार पढ़ा, इस time मुझे free will click भी हुआ, you know. So, yes, thank you all for giving us this opportunity and giving me this privilege. Thank you. Yes, Chola. Hi. For me, I just started 2 days back, and some days are like I'm not in a mood for. मतलब मुझे अपने आप को जनरेट करना पड़ता है. But when I come here within 10-15 minutes, I'm back to that energy. And it's like we know this, we're just reminding each other something like that is happening. And everyone sharing, as you said, it's very, very valuable. Like the one who's reading, you, Kunal, everyone. Thank you. You. Me, myself. Your auntie, one Masi, you say. Very nice. Thank you. Thank you for sharing, Chola. And yes, we are here not at mercy of life, we are at creator. So we have to keep generating what we want. And thank you for doing that. Thank you. And for being here and being diligent. Thanks for sharing. Yes. Hi, Niyati. Welcome. I believe this is your first session. We are very happy to have you. We would love to hear from you a little more about you. And of course, it's very new. It could be very random also. So you can also share whatever is present, you know. We would love to hear from you as and when. Till the time, Shanti, would you like to go? जब से मैंने बुक स्टार्ट की है, मैं तो ये ऐसे तो लास्ट हम लोग साथ में कर ही रहे थे, बट काफी दरवाजे मेरे लिए अपने आप खुलते जाते हैं. लाइक कल मैं एक फंक्शन में गई थी, सोचा पता नहीं क्या करूंगी, कैसे करूंगी टाइम स्पेंड, क्योंकि बोरिंग लोगों के साथ मुझे बहुत बोर होता है. बट कल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बोर हुई. अपने आप सब एकदम स्मूथली होता गया. फिर घर पे आके बैठी तो पता चला कि हाँ भाई, मैं वो मूड से गई थी कि नहीं, जो भी है मुझे बोरिंग में नहीं, बोर जोन में नहीं रहना है, और मैं अपना मूड अच्छा रखूंगी और खुद को इम्प्रूव करूंगी. तो लाइक कल मेरा फंक्शन एकदम स्मूथली और एक्साइटेड, मतलब जितना बोलूं उतना कम है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना लेवल हाई गया. थैंक यू. Thanks for sharing, Shanti. I so resonate about the functions. I so resonate. Yeah, I do think the quality of the day has immensely changed, because for me it's 8 in the morning when you guys start. It's not even 9:30, so it's quite early for me. So I completely relate to what Kunal was saying, and I also feel like, mentally, intellectually we know many things, but there's small things that we do. Like, this is creating a memory, a satsang. Like, like I went for a walk, and then, okay, I was feeling, oh, my weight is not dropping. Like, suppose I'm trying to lose weight. And then I'm like, kya farak padta hai? Healthy to hoona. Chalo. Okay. Smile on my face and went. And that only happened because of this book reading, because I wanted to find, it's not like I'm faking it, It's just like putting your attention to what is working and being grateful for that. क्या बात है, क्या बात है. I think your shares inspire me to start walking or jogging or doing some kind of activity again. Thank you for sharing that, Pariti. Thank you. And I see that change in your participation and involvement, and that brings a lot of interesting flavor and inclusion in this whole book reading. So thank you for being so present and yourself. Thank you. All right. So I think we can now start with the session summary. Shall we start this? Okay, so points of power. Drishti, now you can read 3 points and then I'll explain. That works? Yeah. Okay. Okay. Points of power.
everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. So what a surprise, यूनिवर्स में सब मैग्नेटिक है, हर चीज में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारी जिंदगी बना रहे हैं. So yes, but as I think some of us mentioned, ये पता तो है, but उसको हमारे कोर में कैसे उतारे, like how in each moment हमारे सामने अगर अच्छा भी है तो भी a reminder that it is my thoughts and emotions that created this and I can create it to whatever more I want. अगर कुछ बुरा भी है, wow, I have created this, so the power is still with me, because I can now create whatever I want. तो अगर हमें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, उससे हम एक फ्रीक्वेंसी पे आएंगे और वो फ्रीक्वेंसी पे वैसे 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 लोग और सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ होंगे. सो दिस ऑल्सो इफ वी सी द अदर वे, कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हैं, सो व्हाट दैट सेज अबाउट मी इज मैं एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे हूँ. पर अगर मेरे को मेरे आजू बाजू के लोगों के लिए बहुत जजमेंट्स है, बहुत एंगर है कि ये ठीक नहीं है, वो बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, व्हाट इट अगेन सेज इज कि मेरी फ्रीक्वेंसी पे जजमेंट है, मेरी फ्रीक्वेंसी में विक्टिमहुड है, मेरी फ्रीक्वेंसी में मिसअलाइनमेंट है. सो जो मिरर, why is mirror needed? Because right now I can't see really what is here, what is on my face. I need a screen, I need a mirror to see कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये है. But I will not fight the mirror because it is showing what is in me. So people around us, situations around us, circumstances around us are showing what energy we are in. So उसके लिए भी थैंक यू कि अच्छा यहाँ पे बताया गड़बड़ है, ओके लेट मी सी, लेट मी फिक्स इट हियर. हम बाहर फिक्स करने जाते हैं और देन वी कीप फॉलोइंग ऑन आवर फेस अबाउट इट. तो बाहर फिक्स ही नहीं करना है, अंदर जाके फ्रीक्वेंसी बदलनी है, अंदर जाके कॉलिंग फॉरवर्ड. अच्छा ओके, एंगर आई सी यू, एंगर आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिला है, आई फील यू, थैंक यू फॉर शोइंग मी यहाँ पे अंधेरा है. व्हाट वी नीड लव एंड सेफ्टी. ओके लेट्स कॉल दैट, let's call our creatorhood, let's call के मेरे हाथ में ये पावर है. isn't it? Acknowledge करना, किसी से इमोशन से फाइट करोगे, तू नेगेटिव है बोलोगे, वो बड़ा होता जाएगा. उसको acknowledge करना है, उसको थैंक यू करना है, उसको समझना है, उसको इंटीग्रेट करना है, और वो जो एंगर का पावर है फिर वो मेरी लाइफ में आ जाएगा. नाउ इट इज ऑन माई साइड, इट इज नॉट अगेंस्ट मी. So change our frequency at any time by changing how we feel. कैसे change करेंगे? Simply frequency feeling बदल के हम नए dimensions इसी moment, यही moment हम tap कर सकते हैं. So what this is कि जिस moment हमने frequency बदली, हमने अपना future बदला, हमने अपनी destiny बदली और हमने अपना past भी बदला. नॉट जस्ट फ्यूचर बदला, बिकॉज अभी तक पास्ट की 3 चीजें जो सही नहीं थी उसको पकड़े थे, तो हमारा पूरा पास्ट हमें वही लग रहा था. बट सडनली हमारे पीछे 3 करोड़ वो चीजें आ जाएंगी विच हैव वर्कड फॉर अस, दैट हैव मेड अस इनटू दिस प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी हियर. सिंपली एक नजरिया शिफ्ट करने से, सिंपली एक फीलिंग शिफ्ट करने से. सो वो पावर कोई फ्यूचर में नहीं है, वो पावर हमारे साथ, हमारे पास हर मोमेंट पे है. Only question is, are we using it or not? Thank you. Yeah, Drishti. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. Many people put their feelings on automatic pilot. The feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feeling that are the cause of what happens to them. To change anything, whether it's the circumstance of money, health, relationship, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. लाख दुखों की एक दवा है,
तुम्हारी फीलिंग्स चेंज करो. आई थिंक दिस आई विल कीप ब्रिंगिंग अप. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग विल मैग्निफाई व्हाट वी ऑलरेडी आर. यू नो, sorry, why success is not the solution, why getting a home is not the solution, why having a baby is not the solution, because everything will magnify तुम क्या हो. एक ऑरेंज है और ऑरेंज को प्रेशर किया, उसको लाइक यू नो उस पे बहुत ही प्रेशर डाला तो ऑरेंज जूस निकलेगा. प्रेशर डाला इसलिए ऑरेंज जूस नहीं निकला. ऑरेंज जूस तो था ही, पर उसके अंदर जो है वही निकलेगा. सेम जब हम सक्सेसफुल होंगे, जब बच्चा आएगा, जब शादी करेंगे, तब दो सिचुएशंस माइट प्रेशर अस, यू नो एंड तभी हमारे अंदर जो है वो निकलेगा. यू नो नए देश जाएंगे, नए घर जाएंगे, हमें लगता था उससे जवाब मिलेगा, नहीं, उससे तुम्हारे अंदर जो है वो और मैग्निफाई होगा. सो सक्सेस इज अ ग्रेट मैग्निफायर. हैविंग अ किड, बीइंग मैरिड इज अ ग्रेट मैग्निफायर. और तुम्हारे अंदर जो है वही मैग्निफाई होगा. कुछ जन सक्सेसफुल होके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मिजरेबल हो जाते हैं, कुछ जन सक्सेसफुल होके एकदम शाइन करते हैं. एंड इट्स ऑल अ जर्नी, जस्ट बिकॉज अरे ये मिजरेबल हुआ, वो मैं जज करने लग गई, तो मिजरी विल कम टू मी. दे हैव टू बी ऑन दैट जर्नी. But it is not me saying, and it is all serving. Misery is also serving the same goal of leading him to love or leading her to love. So everything is in our service to lead us to love. But so simply मैं शादी करके खुश होंगी नहीं, मैं खुश हूं और वो खुशी मैं जहां भी जाऊंगी, जो करूंगी उसमें मल्टीप्लाई होगी. It's that. So something negative has happened in our life, we can change it because it is never too late. Because वो negative इसीलिए है क्योंकि हमने उसको negative जज किया है. सिंपली मैं अगर उसको पॉजिटिव जज करूं तो वो मेरे साथ पॉजिटिवली, और वो सिचुएशन ही पूरी बदल जाएगी. राइट. हेड्स में एक अलग होता है, टेल्स में एक अलग होता है. सिर्फ मैंने फ्लिप किया, वो पूरा नजरिया बदल गया, वो पूरा एक्सपीरियंस बदल गया. राइट. तो सिंपली हमारा नजरिया बदलो, जिंदगी बदलो. और हम कहाँ चैलेंज खा रहे हैं, हम ऑटोमेटिक पायलट पे है कि एक मशीन चला रही है, एक सॉफ्टवेयर जो पहले 5 साल में डाउनलोड हुआ, बस वही 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 हमारे नेक्स्ट 500 साल, 50 साल, नेक्स्ट जनरेशन प्रॉब्लली हमारी डिसाइड कर रहा है. अगर उसको ऑटोमेटिक पायलट से निकाल के हमारे हाथ में लाएंगे तो कोई और पेपर, कोई और चांद तारे, कोई कुछ भी हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर पाएगा. हमारी डेस्टिनी हम जो इमोशंस को बुलाएंगे उसमें होगी. सो कभी भी कोई भी सिचुएशन में हमें बोर हो रहा है, रिमाइंड आवरसेल्व्स वी आर बीइंग एट मर्सी ऑफ द सिचुएशन. व्हाट कैन आई डू टू क्रिएट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उसको बोर क्यों हो रहे हैं, हम उसको जज कर रहे हैं, हमने उसको नेगेटिविटी दी, हम उससे 10 स्टेप बाहर पीछे गए. अभी उसमें 10 चीज अच्छी बोलो, reconnect back and then give love and call forward the emotions we want. It will work, it has to work. सो अगर हम ऑटोमेटिक पायलट पे रहेंगे तो सेम पास्ट रिपीट होता जाएगा. बट वी डोंट रियलाइज दैट इट्स अवर फीलिंग दैट आर द कॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस. सडनली हमें पता चला है हम ड्राइवर सीट पे है, नाउ वी कैन टेक दिस कार टू वेयर एवर वी वांट. और ये चीज हर एरिया में पॉसिबल है. ये रिश्तों, क्योंकि हर चीज एनर्जी है. हमने यहाँ बैठ बैठ के पैसे को बड़ा बना दिया है, बट मनी इज ऑल्सो जस्ट एनर्जी. सेम अगर रिश्ते में वो एनर्जी डाल के तुमने रिश्ता खिला दिया, एक और कोई नोट पे हमने एनर्जी डाल के मनी खिला दिया, एक और बॉडी पे वो एनर्जी डाल के हमने हेल्थ खिला दी. ये सेम है, उसको सिर्फ अलग अलग एरियाज में डालना है. तो जब हमने वी स्टार्ट कॉलिंग फॉरवर्ड द इमोशंस वी वांट, हमारा रिश्ते, मनी और हर सब्जेक्ट हमारी लाइफ खिल जाएगा और रिफ्लेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर फीलिंग. अगर पैसों में डर लग रहा है तो मनी वो रिफ्लेक्ट करेगा. पैसों के लिए प्यार है तो मनी वो रिफ्लेक्ट करेगा. सेम फॉर हेल्थ, सेम फॉर एवरीथिंग एल्स. You can read all 4. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life.
every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day, you can change the future through the way you feel. Yes. So again, ये situation है. How do we judge the situation? How do we disconnect with the situation? Sometimes with blame. इसने किया इसलिए ऐसे हुआ, ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, या फिर क्रिटिसिज्म, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, या फिर फाइंडिंग फॉल्ट्स, कंप्लेनिंग. हमें लग रहा है हम रिश्तों में हमारे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और हम लग रहा है हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं ना. मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं. नहीं, हम डिस्कनेक्टेड है. हमने कुछ और चीज को लव समझ लिया है, हमने फिक्सिंग को लव समझ लिया है, हमने कंट्रोलिंग को लव समझ लिया, और हम वो रिश्ते में और दूर 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 होते जाते हैं. लव इज अबाउट एब्सोल्यूट इंक्लूजन. Love is about absolutely loving and accepting this moment as the way it is, this person as the way it is. एक बहुत ही beautiful quote है, like people are like sunsets, you know. In the sunset you cannot say अच्छा थोड़ा orange कम करो, थोड़ा यहाँ पे pink बढ़ाओ, यहाँ पे थोड़ा yellow डालो. No, we just go and enjoy the sunsets in its different hues, in its different colors. सेम विद पीपल. यू कैन नॉट से अरे तू थोड़ा गुस्सा कम कर, तू थोड़ा ये ऐसे कर, तू थोड़ी खुश रहे, फिर आई सी आई लव यू, फिर आई एंजॉय यू. नो, पीपल आर लाइक सनसेट, दे आर टू बी अडोर्ड. एंड हर जन के अलग फ्लेवर्स है. बट अगर हम उसको फिक्स करने लग गए, कैन वी फिक्स द सनसेट? नो. बट यस, वी कैन एंजॉय इट. We can never fix people. We are not here to. It's not giving love, you know. And it is painful when we do it, because that pain is reminding us that we are going wrong. Just come back to the energy of love. So हम जो love के नाम पे जो criticize करते हैं, blame करते हैं, victimhood feel करते हैं, it's not love, and that's why painful. It is an excuse to not love. तुम ऐसे होगे तो मैं प्यार करूंगी. No, it's an excuse to not love. And this love we are talking about is not related to just हमारे पति बच्चे and all. It's a quality we can develop in us, that no matter who we see, no matter where we go, that quality emits. पत्थर को देख के भी झुकेंगे, स्काई को देख के भी झुकेंगे, रास्ते पे चलते इंसान को देख के भी झुकेंगे. Because then it doesn't discriminate. So our only free will is, क्या हम excuses में अटके रहेंगे, या हम हमें जो चाहिए वो create करेंगे. तो हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बना रहे हैं. जो हम बोल रहे हैं वही हो रहा है. हम रिपीटेडली देख रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ वही हो रहा है. सो व्हाई डू आई इवन से व्हाट आई डोंट वांट? व्हाई डू आई से व्हाट आई डोंट वांट? सो लेट्स स्टॉप यूजिंग टेरिबल, हॉरिबल, अच्छा नहीं है, बोरिंग है, इरिटेटिंग है, ठीक नहीं है, ऑफुल, डिस्गस्टिंग. दीज आर वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लीडिंग अस टू व्हाट वी डोंट वांट. इंस्टेड जो चाहिए वो बोलते हैं. वाओ वंडरफुल है, वाओ ब्यूटीफुल है, वाओ सुंदर है, वाओ मेस्मराइजिंग है, वाओ सो ब्रिलियंट, सो फैबुलस. सो वो आएगा हमारे पास. हमारे शब्द हमारी सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं. लेट्स यूज इट टू क्रिएट व्हाट वी वांट. एंड इमेजिन व्हाट अ पावर. मतलब इमेजिन, हमें लग रहा था कोई और जीनी कहाँ है जो कुछ कर सकता है. हम ही जीनी है यार. जो बोलते हैं, जो सोचते हैं वो दिखता है, जो बोलते हैं वो सोचते हैं वो सामने आता है. इससे बड़ा पावर क्या है? इससे बड़ा मैजिक क्या है? इससे बड़ी नियामत क्या है? सो बस 51%, कुछ पूरा दिन नहीं, पर एक 51% खुश रहने लगो. तुम रात को खुशी से सो, तुम्हारे 7-8 घंटे तुम निकल गए. सुबह 1-2 घंटे और कर लो, एंड सडनली वो एक फीलिंग में हो गए, तो वी विल सी द डेज विल बिकम लाइक दैट. सो ओनली 51% अगर हम अच्छी फीलिंग में रहे, हमारा पल्ला अच्छी फीलिंग का भारी हो जाएगा. एंड दैट विल कीप ब्रिंगिंग मोर 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 गुड थिंग्स इन आवर लाइफ. सो हर दिन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लाइफ. नॉट जस्ट हर दिन, हर मोमेंट. हर एक दिन में कितने मोमेंट्स होते हैं. सो हमें दिन में इतने सारे मोमेंट्स दिए गए हैं कि चलो तुम जो चाहिए वो क्रिएट करो, चलो तुम्हें जो चाहिए वो क्रिएट करो. So if we come from the past, we'll create the past. अगर हम कुछ उसको फ्रेश नजरिए से देखें, ये मोमेंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है, उसको वो एक्साइटमेंट से देखे. ये मोमेंट फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऑकर हो रहा है, उसको वो लव से देखे, तो हम उसमें लव क्रिएट करेंगे.
वर्सेस यार इतने साल निकल गए, ये कब खत्म होगा यार, चीजें बस खिंचती जाती है, रोज यही यही करना है। अगर उसमें वो डालोगे तो वो क्रिएट होगा। द चॉइस इज आवर्स, हम क्या डाल रहे हैं। Every moment is a fresh moment, but it becomes a drag when we are putting the old soup in it. So the choice is ours. हम उसको freshly देख रहे हैं, उसको हमारे good part की tipping point में add कर रहे हैं, कि we are repeating the past. And on any one day you can change the future. Simply हमने ये moment का charge लिया, एक दिन हम खुश रहे, हमारा पूरा future, हमारी पूरी destiny बदल जाएगी. Simply by the way we feel. Simply by the way we feel. So thank you all. That brings us to the end of chapter 3, and it has probably set a little more base, a little more foundation for now to jump into the creation process. अभी हमने ये फंडामेंटल्स देखे कि अच्छा कैसे चीजें होती है, खुद को याद कराया, हमें ये सब पता ही है, बट एक थोड़ा स्ट्रक्चर में डाला. And now we will have a chance to start creating what we want out of it. कि हम अभी ये मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, हम हर मोमेंट ये चीज कैसे अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम वो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाएंगे. बिकॉज हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. किसी भी जन को इस चीज में डाउट है कि हमने हमारी लाइफ मैनिफेस्ट नहीं की, बिकॉज दिस इज अ चांस, दिस इज अ टाइम टू आस्क दैट. जो भी छोटी से बड़ी चीज हमारे आजू बाजू है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हमने क्रिएट की है. सो वी आर द क्रिएटर्स, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. हर मोमेंट ऐसा नहीं ये मैंने मैनिफेस्ट किया, ये नहीं किया, हर चीज. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओन इट अप. जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे पास है, जो भी मैं हूं, वो मेरा मैनिफेस्टेशन है. पता नहीं था कैसे हो रहा था, तो ऑफकोर्स हम पहली रोटियां बनाते हैं जब पता नहीं होता, तो वो हर टाइप की बनती, बट उस पर प्रैक्टिस लाए तो देन जैसे हमें चाहिए वैसी बनेगी. सेम अभी तक पता नहीं था ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, तो कुछ भी करके बस निभा रहे थे. बट नाउ वी विल लर्न हाउ वी डू इट कॉन्शियसली, हाउ टू डू इट कॉन्शियसली. So excited to start this chapter, and we have 10 minutes. And I would want to set the context for this chapter because, as Drishti also mentioned, that we can start doing some activity together. Uh, so we will probably we'll take 5 to 10 minutes by the end of the chapter or something. Okay, we will do something to create the life we want. हम हमारी लाइफ में हमें क्या क्रिएट करना है, हम वो साथ में बैठ के उस पे काम करेंगे. हम उस हिसाब से चैट जीपीटी से कुछ इमेजेस क्रिएट कराएंगे, हम उस हिसाब से खुद के जर्नल में कुछ लिखेंगे, हम वो वाइब्रेशन में ट्यून इन होंगे. सो वी विल टेक लास्ट 10 minutes टुमारो फॉर दिस. तो उसके लिए हम थोड़ा प्रेप कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट टू. So we are going to start today with the power and creation. Yes, Drishti. Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endless bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart desires must come to you. Indeed. In these next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationship. Sorry. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. To bring a specific desire to you, follow the simple steps of creation process. Whether it's bringing something you want or changing something you don't want, the process is always the same. The creation process. Imagine it, feel it, and receive it. तो अब हम ये क्रिएशन की बात कर रहे हैं. तो हर मोमेंट, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज इनफाइनाइटली क्रिएटिव. अगर हम ये मोमेंट जो हमारे सामने है उसको एक फ्रेश लेंस से देखें, विदाउट एनी फिल्टर्स, अगर उसको फ्रेश लेंस से देखें, वो मोमेंट इनफाइनाइटली क्रिएटिव है. वो मोमेंट पे सृष्टि के सारे राज छुपे हुए हैं. वो मोमेंट पे तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करने की हर सीक्रेट छुपी हुई है, हर एक्सेस छुपा हुआ है.
ये एक एंट्री पॉइंट है टू द लाइफ वी ट्रूली ट्रूली डिजर्व एंड डिजायर. तो हर मोमेंट इज इनफाइनाइटली क्रिएटिव एंड यूनिवर्स इज एंडलेसली बाउंटीफुल. यूनिवर्स में इतनी चीजें हैं, इतनी 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 कि हम सोच भी नहीं सकते. कैन वी इमेजिन हाउ वास्ट द गैलेक्सीज आर? कैन वी इमेजिन हाउ वास्ट आवर प्लैनेट इज? कैन वी इमेजिन वो सन कितना पावरफुल होगा? और ये सृष्टि जो ऐसे लाखों करोड़ों सन, इससे भी बहुत पावरफुल सन्स को क्रिएशन का जो कारण है, we can't even imagine how bountiful this universe is, how bountiful this power is. And we don't even realize हम वो power का part है, हम वो power का अंश है, हम वो power का प्रतिबिंब है, हम वो उसके cells हैं. We are, without us there is no power. We are the very force that is, is one with that power. So हम उससे डिस्कनेक्टेड है, इसलिए लाइफ में डिस्कनेक्शन है. And everything in our life is leading us to reconnect back to that knowing, to reconnect back to that power. So जो scarcity है, जो अभाव है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बोरिंग है, ये ऐसा है, वो हमारे थिंकिंग में है, वो हमारे पास्ट में अटके रहने पे है. So just put forth a clear enough request and everything your heart desire must come to you. ये हम कर रहे हैं, ये चाहिए, ये ऐसा है और वो आता है. But abhi now we will do it for what we want. So we will now be very clear for what we want, and then we will bring that in our life. And उसका power is in this moment. और वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, यूनिवर्स के पास है कि नहीं, वो हमें सोचना भी नहीं है. बिकॉज हम जिससे ले रहे हैं उसके पास इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते. So उसके पास है कि नहीं is not our business. Our business is tapping into this moment, asking for what we want and receiving it. That is it. So it's very, very easy how to harness for the force of love for money, health, career, business, relationship, or anything else, because with this knowledge, we will be able to change our lives to whatever we want. हमें जो चाहिए, वो हम create कर पाएंगे. So to bring specific desire to you, we have to follow these steps. Imagine it, feel it, and receive it. ये हम हर moment पे करते हैं, right? For a function, I will imagine, अरे bore होगा. I feel irritation before even going there. And then in function, what do I receive? Oh, boredom and irritation. Versus मैंने shift किया कि नहीं, I will go to it, I imagine कि नहीं, अच्छा कुछ देंगे. So I imagined, or like what Shanti shared, she imagined a good vibe, a good feeling, and she felt a good vibe, a good feeling. And then what she experienced was a great function, a most fun event, So ये हम हर moment में कर रहे हैं, कहीं consciously. किसी पे अगर मैंने एक story बनाई कि कुणाल ने ये नहीं किया, कुणाल ने ये नहीं किया, so पहले मैंने imagine किया, हर चीज एक story में आई. ओके, मैंने वो इमेजिन किया तो वो स्टोरी के हिसाब से मेरे को एक फीलिंग आई. ये नहीं किया तो इरिटेशन आया, गुस्सा आया. अभी मैं कुणाल के पास जाऊंगी, उसको इरिटेशन और गुस्से से बोलूंगी, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट मल्टीप्लाइड इरिटेशन एंड गुस्सा. तो हम यही हर सिचुएशन में करते हैं. अभी हम वो हमारे लिए काम कराएंगे. सो फर्स्ट वी इमेजिन, वी कुक अप अ स्टोरी, देन वी एड इमोशंस टू इट. गुस्सा तो उसके साथ, उससे मिलने से पहले था, और उसके साथ जाके वो मल्टीप्लाई किया, वो मुझे और गुस्सा मिला. Versus if I feel, yaar, what a lovely husband, what a beautiful supportive partner, I am so lucky, I am so grateful, and what I imagine is happy, love, grateful, and then I go and that will multiply. तो ये हम हर प्रोसेस में कर रहे हैं. We will see how to do it more consciously, and it's an invitation कि आज और कल तक हम ये चीज में आए. We create, वी रिमेम्बर हमें क्या कॉन्शियसली क्रिएट करना है. हर एरिया में एक या दो चीजें सोच के आओ. Yes, tomorrow bring the pictures you want to bring, and we will do some, like, we will have 10 minutes where we can create what we want here. We can create what is present for us here. And we are almost at the end of our this thing, but I will take 2-3 more minutes, because another thing I want you all to also sit with is this quote. ये quote है, faith is to believe that which you do not see yet, and the reward of this faith is to see that which you believe. So I will send this quote. I want you all to
get present to that what this quote means for you. So कल हम दिन की शुरुआत, what faith means for you, you know, and what can we do to bring more faith or connect to the frequency of faith in our life, वो शेयर करेंगे. Is it making sense? हमारे लिए फेथ क्या है, हमारे लिए विश्वास या भक्ति, आई डोंट नो द राइट हिंदी वर्ड, आई लुक फॉर इट, क्या है, और हम वो फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं. कैन वी शेयर दैट टुमारो? सो कल के लिए होमवर्क है टू आंसर दिस, व्हाट दिस कोट मीन्स फॉर यू, और व्हाट फेथ मीन्स फॉर यू, और व्हाट हेल्प्स यू कनेक्ट विद दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फेथ. एंड ऑल्सो वी प्रिपेयर कि हमें अपने लाइफ में क्या क्रिएट करना है. एंड फॉर दैट वी कैन यूज दिस प्रोसेस ऑफ इमेजिन, रिसीव एंड फील. इमेजिन, फील एंड रिसीव. या किसी को कुछ सवाल? नहीं? All right. So I think on that note, we can end this. We see you all tomorrow. Please come prepared. Please question yourself what faith is for you, and be prepared. Come with your photos, come with your dreams, come with your imaginations, come with your wishes, and mainly come with your open heart. And yes, let's enjoy a song. Let's give an ode to the Zindagi, because this Zindagi na milegi dobara. Enjoy the song and see you all tomorrow. Have a good day. Have a great day. And thank you all once again for being here.